So welcome to Wise IAS Academy. We'll start our lecture with federalism. अच्छा, फेडरलिज्म में एक और एस्पेक्ट है. फेडरलिज्म हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है. There is one more way to understand the federalism. One is, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है असिमेट्रिकल. Symmetrical and asymmetrical. Okay. What does it actually mean? That it depends upon the, ये दोनों का डिफरेंस ये है, मीनिंग ये है कि काउंसिल ऑफ स्टेट का जो बॉडी बनती है, ठीक है, इट माइट बी अ लोअर, इट माइट बी हायर अपर बॉडी इन द सेंट्रल लेजिस्लेशन. सो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन वहां पे कैसा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके. सो उसके बेसिस पे कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, on that basis it is known as whether it is a symmetrical federalism or asymmetrical federalism. So in the case of council of state, the another name is राज्य सभा, ठीक है. यूएस में इसी को सेनेट कहते हैं हम लोग, ठीक है. इट इज नोन एज सेनेट, ठीक है. Now what happened in the US, there are 100 सीट्स इन सेनेट. सेनेट वहाँ पर अपर बॉडी को सेनेट कहते हैं, ठीक है. सेनेट में यहाँ पे 100 सीट्स हैं, वहाँ पे 100 सीट्स हैं. एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन यूएस इज 50 प्लस वॉशिंगटन डीसी. सो दिस ब्रिंग्स यू टू 2 मेंबर पर स्टेट, 2 मेंबर पर स्टेट, ठीक है. Now, in the case of India, ठीक है, so every state get the equal representation here, ठीक है. every state को क्या मिला, equal representation, ठीक है. Now this, when you have the equal representation for all the state, in spite of the state is big, state is small, state is having more population or state is having a less population, irrespective of that. जैसे Texas is a big state, ठीक है, California is a big state, okay. So in spite of that, you will have only 2 representation. First is the territorial difference. Another, you might accommodate the huge number of population within the state, and some state has a very sparsely populated, ठीक है, but you will have the same representation, that is a 2 member, okay, equal representation to everyone. Got it? This is, when this is happening, this is known as, this is known as symmetrical representation, okay? Equal states. Now in the case of India, in the Rajya Sabha, what is the force of giving, what is the force of, or the premises of having the member population? Okay, population. We have given population as a main criteria to determine the strength of any house. Population as a main criteria to determine the strength of any house, that matter. Okay, fine. So in this population, if you understand the population, now some state has a larger population, some state has a small population. For that reason, what will happen? The representation will vary, different. So because of this, we have a different representation. So you can say state like Uttar Pradesh will have a 32, and some northeastern state like Nagaland and all, they will have 1. Delhi has how many? 2. 2, 1, 3. Goa? 2. So, depending upon the population,
and depending upon the size, okay, not only on the basis of the population we will determine your strength. This form of arrangement is known as asymmetrical. इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट. ठीक है, इसी के लिए लोकसभा और राज्यसभा में the North Indian state are dominant. The one who has acquired the confidence of North India, they will rule the country. ठीक है, fine, got it. अभी आते हैं, this is the another system of understanding the federalism. Okay, now let's talk about cooperative federalism. Now the notion of cooperative federalism, नहीं, competitive federalism. एक है competitive federalism. Now within that, इंडिया का फेडरलिज्म और अमेरिका का फेडरलिज्म में एक मेजर डिफरेंस है. Now you tell me whether that difference justified or not. India says that America says American federalism is known as coming together federalism. ठीक है, American federalism is known as coming together federalism. Indian federalism is known as holding together federalism. Holding together federalism. Now, what do you understand by the expression coming together federalism and holding together federalism? These are the two different expressions. Okay, what do you understand by these two? हाँ, जबरदस्ती हम बाइंड कर रहे हैं. यस, एनी आइडिया? कल बताया था इसका आंसर. हाँ, मतलब कि साथ लेके अगर अप से है डाउन से है, हमने अपना होल्ड कर रखा है, उसमें कमिंग टुगेदर, अगर कोई चेंज है, अगर वो आ गया ऐसे, तो अमेरिका वाले में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? दे कैन गो, कम आउट ऑफ दैट फेडरलिज्म. हाँ, they want to come out of that arrangement of federalism, declare that particular state as an independent nation. They can do or they can not. If I have created the union, so I have the right to move out. हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है. अरे सोचो थोड़ा, पॉसिबल है या नहीं है? इतना कंफ्यूजन है. मतलब लॉजिकली क्या है, मैंने क्रिएट किया है तो मैं निकल सकता हूँ. लॉजिकली पॉसिबल है, ठीक है. इट वाज एक्चुअली पॉसिबल, बट बिकॉज ऑफ US Supreme Court, the federal court, because of the judgment of the US federal court, now they cannot move out. ठीक है, because of that judgment, whatever the judgment that US court has given, okay, because of that now the American states, the states in America, ठीक है, now they cannot come out of that. ठीक है, that is known as external sovereignty. They lost that external sovereignty. ठीक है, okay, वो that particular sovereignty has been lost by them the moment they have incorporated to create a union. ठीक है, इंडिया के केस में क्या है, when we talk about India is a holding together federalism. वहां पे coming together federalism, यहाँ पे holding together federalism. होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का क्या सेंस है? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब ये है कि सिंस द एंशिएंट टाइम दिस हैज द यूनियन हैज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रक्टेड many a time, union also and state also, both. ठीक है, union and state has created
destroyed many times. कभी गुप्ता रूल कर रहा है, कभी हर्षा रूल कर रहा है, कभी मुगल्स रूल कर रहे हैं, कभी कोई रूल कर रहा है, ठीक है, कभी मराठा दिल्ली तक पहुंच जाता है और कभी मराठा गुजरात तक ही रह जाता है, ठीक है. सो दिस हैज बीन द टेरिटोरियल अरेंजमेंट, ओके, द टेरिटोरियल डिस्ट्रक्शन हैज मूव्ड, वो कम और ज्यादा होते रहा है. सो बट इट इज द ब्रिटिशर्स हु हैज united India in a geographical entity, okay, and recreated this state. That is the reason that Dr. Ambedkar has defended this argument in the Constitution Assembly and said that India's union is indestructible, but India's state is destructible. ठीक है, इंडिया का स्टेट एग्जिस्टेंस depends upon the will of the union, not people. Will of the union. इंडिया का स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है, जो तुम आज हरियाणा देख रहे हो, कहाँ तक है बॉर्डर? बदरपुर बॉर्डर. हरियाणा का बॉर्डर कहाँ? बदरपुर, फरीदाबाद, दिल्ली में, ठीक है. तो कल चाहेगा तो क्या हो जाएगा? वो दिल्ली और आगे चला जाएगा या और पीछे चला जाएगा. It totally depends upon the will of the union, ठीक है, the boundaries of the state. In America, this is what is known as holding together state. Holding together state. Now, I mean, America, this is not the case. You cannot reduce the boundaries of the state. ठीक है, you cannot reduce or increase the boundaries of the state. The boundaries of the state which is fixed will remain fixed, ठीक है, and even the state cannot destroy the union after the Supreme Court judgment. The Federal Court के judgment के बाद में अब वहाँ के states जो हैं वो basically they lost the permanent external sovereignty rights. Permanently they lost. The moment you created the union, you lost that right. ठीक है, the sovereignty of moving away from the arrangement. ठीक है, तो तुम सार्क बना लो, सार्क ऑर्गेनाइजेशन. अब सार्क इज ए सिंगल बॉडी, ठीक है, कहीं भी लोकेशन में उसका हेडक्वार्टर बना दो. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? वेरी गुड. देखो ज्यादातर हेडक्वार्टर कहाँ रहते हैं मालूम है? जो बहुत अच्छी जगह होती है ना, ठंडी अच्छी बढ़िया, इसी के लिए मेजर यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेजर यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जेनेवा, ठीक है. जेनेवा कहाँ है? स्विस. बढ़िया जाते हैं, आराम करते हैं वहां पे लोग ऑफिसेस, फिर सोचते हैं कि ठीक है करेंगे कुछ, ठीक है. तो बहुत वेरी स्मार्ट पीपल, दे हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट फॉर देमसेल्फ. ब्यूरोक्रेसी व्हेन मेक्स द पॉलिसी, यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ब्यूरोक्रेसी इज नेवर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल. ब्यूरोक्रेसी ऑलवेज सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ एलिट्स. क्योंकि व्हाट, व्हाई? Because the bureaucracy in itself is a new elite, ठीक है, it is a new elite. Okay, once Ashish Nandi, you know Ashish Nandi, one of the famous sociologists in the country, in a Jaipur Fest मालूम है? जयपुर फेस्ट नहीं मालूम है? इस साल नहीं हुआ एक्चुअली में, होता है, ठीक है. क्या है वो? बुक फेयर. बुक फेयर तो दिल्ली में बहुत लगता है. यू शुड विजिट बुक फेयर. बट क्या होता है? डायस्पोरा का मीट है वो, जनवरी में होता है, ठीक है. जयपुर फेस्ट में आशीष नंदी हैज सेड दैट द वन ऑफ द bureaucrats coming from the lower strata, the low caste, they are most corrupt. The very next day FIR got registered against him. ठीक है, okay, because no, that is the reality. We have made, well, I'll teach you the bureaucracy. You will see that in the period of 70s and 80s we were having a सरकारी स्कूल bureaucrats, ठीक है. उसके बाद में वो 90s के बाद में फिर बदल जाएगा. फिर इट इज द डोमिनेंट बाय द
technocrats rather than having the bureaucrats. We will move to that. Bureaucracy will always serve the interest of whom? It will always serve the interest of the elites rather than serving the interest of the common people. This is one of the biggest criticism of bureaucracy. Bureaucracy is remaining indifferent, okay, towards the plight of the common people. We are making bureaucracy more sensitive. Understand why the paper ethics has been introduced in your syllabus. 65 साल हो गए थे नहीं किया, अचानक से ये क्यों कर दिया? Why? Because the bureaucracy was turning into more inhuman. ठीक है? You can cite one or two best example, but that is not sufficient. In the larger, that is the reason the bureaucracy जब policy बनाती है, it try to intact its interest first, then you make the policy for the people. ऐसे देखा जाए तो कोई भी रूलिंग पार्टी या कोई भी रूलिंग बॉडी होती है, पार्टी बॉडी या एनीथिंग गवर्नमेंट, नेवर वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल. कॉमन पीपल के इंटरेस्ट में सिर्फ फिलैंथ्रोपिस्ट ही काम करते हैं और कोई नहीं काम करता है. ठीक है, philanthropist is the best. They work in the interest of the common people. Okay, so competitive federalism कहाँ थे हम लोग? यही था ना? Okay, so another is holding together. समझ में आया वो क्या है प्रॉब्लम? Coming together and holding together. Okay, now you answer me one question. Under the Article 3, we'll come to that. Okay, kindly read it and come. Under the Article 3, ठीक है, it has given the power to the union to create a new state. ठीक है, change the boundaries, okay, name or anything, and that will be considered as what? That will be done not under Article 368. And Article 368 is not a power of, it is not a power of the union government to amend the constitution. It is just a procedure that to be followed while you are initiating a amendment procedure. You're a lawyer. Tell me why there is a difference. Law नहीं. वापस पूछ के आओ. 368 में क्या प्रॉब्लम है? क्या वो पावर अमेंडमेंट का पावर देता है कि वो प्रोसीजर सिर्फ फॉलो करने के लिए बोलता है while having the amendment? ठीक है, अमेंडमेंट का पावर कहीं और से आता है उसके पास में. हाँ, वो तो रिस्टोर कर दिया था बाद में 44 में. 44 was the biggest blunder. 42 was actually 42 Amendment Act. What Indira Gandhi has done, it was बहुत सारे एस्पेक्ट पे तो बहुत ठीक था, लेकिन what she has done in the context of relationship between the president and prime minister, that was the best actually. ये क्या नाम, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट under Article 44th Amendment Act, they has again diluted it. Otherwise, it was the best. That was the ideal case that has to be done in the parliamentary democracy. ठीक है, वो तो बाद में उन्होंने खराब कर दिया पूरा का पूरा. That is another case. Okay, so holding together and coming together, these are the two different things that you need to understand. Now, Article 3 says that, according to Article 3, the union has an explicit power to create the new state. According to Bibek Debroy, ठीक है, एक कम्युनिस्ट लीडर हैं बंगाल से, ठीक है, राज्यसभा एमपी भी हैं, अभी भी हैं, नहीं है पता नहीं, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन भी है. ही इज देयर और ही इज नॉट देयर, नहीं कम्युनिस्ट है तो प्लानिंग कमीशन में तो नहीं होगा मोदी गवर्नमेंट में. यू नो, मोदी इज एंटी कम्युनिस्ट. ओके, मोदी इज न्यू लिबरल. यस, इट इज न्यू लिबरल. दैट इज द रीजन द क्वेश्चन हैज केम इन द यूपीएससी 2019 के पेपर में, गवर्नेंस के पेपर में आया न्यू लिबरलिज्म के ऊपर. ठीक है. Now, according to him, what he says that we should be having, as compared to US, we have 4 times more population than US. ठीक है, 4 times more population than US. But we have only 29 states and the US has 50 states. It is also a time that we should
have the 50 state. This one. There is a demand for the smaller state. ठीक है, हरित प्रदेश कहाँ का डिमांड है? हरित प्रदेश, गोरखालैंड, ठीक है, उत्तराखंड, गोरखालैंड, ओके, दार्जिलिंग का अपना वहाँ का डिमांड है, ठीक है. Why there is a demand for the smaller state? Demand for the smaller state. Is it feasible to have the smaller state or not? ठीक है, असाइनमेंट है कल के लिए, लिखो दोनों. Do we really need a smaller state? Or it is a political stunt? एक तरीके का पॉलिटिकल स्टंट है ये सिर्फ. ओके, फाइन. But now you're done with this. Now competitive federalism. Now you tell me about this. We'll start when we'll start the constitution. Then we'll start this article 3. जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं कि एक्चुअली में क्या पढ़ूंगा. ठीक है. कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. व्हाई कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म केम? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का सबसे मेजर रीजन है, इट इज एक्चुअली अ न्यूलिबरल फिलॉसफी है ये. न्यूलिबरल फिलॉसफी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. नाउ देयर इज टू काइंड ऑफ कंपटीशन है इन जनरल. वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल. दो तरीके का कंपटीशन, ठीक है. नाउ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इज मोर लाइक अ यूनियन इज एक्टिंग लाइक अ बिग ब्रदर. इट्स एक्टिंग लाइक अ बुलिंग बिग ब्रदर. नॉट ओनली बिग ब्रदर. बिग ब्रदर दो तरीके के होते हैं, एक सपोर्टिव होते हैं, एक बहुत एरोगेंट और बहुत नालायक टाइप होते हैं, ठीक है. तो अमेरिका में कैसे होते हैं? नेवर सपोर्टिव. हाँ, सपोर्टिव नहीं होते. इंडिया का कल्चर है, ठीक है. द मोमेंट अमेरिका इज मोर कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है. वहाँ बहुत कॉम्पिटिशन, वहाँ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है. Okay, so there is a horizontal. What in this case, what happened? The relationship between the center and state is like, it is like a bullying big brother. You always taunt, okay, fine, you're not doing this, we will not grant you this. You have to follow this. This is an international agreement. Okay, so it is losing its zone of power. And what is the best example? That is बहुत recent example है bullying brother का, and the state is losing its right. That is GST. ठीक है, state has explicitly lose the right to tax. ठीक है. Now it's like GST, you can say America, the federal country, ठीक है, developed country, nowhere in the world there is a uniform indirect taxation system. ठीक है, nowhere. Actually it is not required. Universal taxation system होना ही नहीं चाहिए था. One of the major cause of having the uniform GST, the uniform taxation system in the indirect tax, one of the major reason was the given is the cascading effect that was happening because of the different taxation system in the state and the union. Cascading effect के वजह से major argument is given this only. Cascading effect. What is cascading effect? मतलब कैसा है कि स्टेट में टैक्स लगा, जो अमाउंट बना सेंटर पे टैक्स लगा, ठीक है, वो तो ठीक है, वो कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है. यू आर बीइंग टैक्स ऑन द टैक्स. जो तुमने टैक्स पे किया ना, उस पे भी टैक्स लग गया, तो टैक्स पे टैक्स क्यों लग रहा है भाई? दैट इज अ कास्केडिंग इफेक्ट. ठीक है, वेलकम टू नो इन इकोनॉमी. ठीक है. Okay, this is a major argument. Why we need a one? So it is like a more of a, when you have a single taxation structure, one of the major argument is given that when you have a single taxation structure, what will happen? In that case, you will have a more investors in the country. Now, center does not have its own land. कहाँ देगा grant?
It has to be, land is a state subject. Land is subject of form, state subject. कुछ एरिया में तो वो लोकल सब्जेक्ट है, जैसे कि ट्राइबल एरिया में you have to take the permission from the tribals. Now what happened in that case? Now this is the major reason why we need a competitive federalism. Horizontal के केस में competitive federalism, horizontal केस में the state competes with each other. States compete with each other, two states. तुमने क्या देखा? You might be seeing the ad of what? हरियाणा का ऐड अपना आता है, उत्तर प्रदेश का अपना ऐड आता है, यूपी का अपना ऐड आता है, राजस्थान का अपना ऐड आता है. किस लिए आता है? To attract investors. ठीक है, come and invest in यूपी, come and invest in हरियाणा, ठीक है, come and invest in पंजाब. ठीक है, so what is this? This is the scheme of attraction. Okay, वर्टिकल में क्या है? सेंटर और स्टेट का है, center and state kind of. Now in this what will happen? It is like, it is the state, what the union will do, union will define certain criteria. Okay, union will define certain criteria. Now there is a two kind of fund that is devoluted to the state. One, it is a statutory fund which is recommended by the finance commission, so that is given to the state. ठीक है, without if and but, they are provided to the state. There is another, there is a special grants. ठीक है, जो स्टेट को मिलता है, ठीक है, on depending upon the performance in the particular sector. Now you might be remembering that we have a lot of programs which is related to prime minister's program. फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है, मालूम है? ये फ्लैगशिप प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर के नाम पे कितने प्रोग्राम्स हैं? कम से कम 100 हैं. कहाँ तक याद रखोगे? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, in the name of prime minister we have more than 100 programs, and in that program we have certain program which is a flagship program. अभी का flagship program क्या है? आत्मनिर्भर. ठीक है, now the central government will lay down the certain guidelines, okay, certain criteria to have a special grants. ठीक है, the one who will perform that or one who will comply with that guidelines will get the center's grant. So it's like a depending on the obligation of the center, more of a like a competition. किस में? नहीं तो कंपटीशन होना नहीं चाहिए ना. फेडरलिज्म क्या है? ठीक है, जरूरत क्या डिस्क्रिमिनेट करने की? व्हाई वी नीड अ कंपटीशन? वी डोंट नीड अ कंपटीशन. आउटपुट बेटर था, ठीक है. अभी यू माइट बी अवेयर अबाउट देयर इज वन फैक्टर दैट इज नोन एज proliferating effect, if I'm not wrong. Proliferating effect है, ठीक है. What happened in this? This is basically, that is the reason I told you read the yesterday's article on that issue. Okay, what happened? There is multiple factor which cumulatively makes a investor to decide whether we are going to invest in this area or not. Okay, so क्या है? It might be a skilled labor. पहले तो land, then electricity, water, availability, skilled labor, multiple effect. Now this leads to what? This leads to more competition. Now which state is able to provide such kind of an activity? The one who is already developed. Then what is this? This is a discrimination. How? With the same guideline of the union, how the poor is going to compete with the rich.
rich is in a more position to provide more facilities, better way off as compared to poor states. This leads to what? This leads to technical discrimination. Imbalance nahi, technical discrimination. This leads to what? Technical discrimination within the state by the center. According to federalism, there has to be no discrimination. That is the reason competitive federalism. सेंटर स्टेट का भी रिलेशन है वर्टिकल में. ठीक है, किसी को समझ नहीं आया हो? हाँ तो कंप्लीट तो स्टेट ही करेगा. सेंटर की अपनी पावर है, पर सेंटर इज गाइडिंग टू मच. सेंटर इज ट्राइंग टू इंटरवीन इन द स्टेट एरिना. जीएसटी की जरूरत नहीं थी हमें. द स्टेट लूज इट ऑटोनॉमी. स्टेट ने क्या किया? अपनी ऑटोनॉमी लूज कर दिया उस पर. टैक्सेशन की ऑटोनॉमी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमी द स्टेट शुड हैव. फेडरलिज्म में यही होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमी है उसकी. बट इंडिया में फेडरलिज्म इज नॉट what it is a choice or it is a compulsion. No, it is a choice. American federalism is compulsion. नहीं, वहां कहां पे? अब समझे नहीं तुम. You are not getting the point. Why it is a choice in India? What do you mean by choice? Option है, either choose, either don't choose. ठीक है. What is a compulsion? You don't have a choice. What happened in American federalism? अमेरिकन फेडरलिज्म में कंपल्शन है. मतलब ये है कि एट एनी कॉज द यूनियन हैज टू फॉलो द फेडरल प्रिंसिपल. दे कैन नॉट ओवरराइड द फेडरल प्रिंसिपल. इंडिया की केस में क्या है? इट इज अ चॉइस ऑफ द यूनियन वेदर आई विल बी हैविंग द फेडरलिज्म और नॉट. दैट इज द रीजन इट इज सेड इंडिया का यूनियन अनडिस्ट्रक्टेबल है. स्टेट नहीं है. स्टेट कैन बी डिस्ट्रॉयड. If it is feasible, India can make a union government. मतलब एक यूनियन ही बना दे, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दे. It doesn't matter for India. India can do that because the history has been the concept of federalism is driven by history, not by constitution. Constitution में concept of federalism आने का reason historical background है. ठीक है? You are over confused, I guess. हिस्ट्री में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनने में हिस्ट्री का हाथ है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म एक्सेप्ट किया है. इंडिया इज अ फेडरल कंट्री टिल द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट इट एज अ फेडरलिज्म और कंसीडर द इंडिया एज अ फेडरल कंट्री. लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कंसीडर करेगा तो यूनिटरी बन सकता है. इंडिया कैन टर्न इनटू अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसीडरिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री. ठीक है. इट कैन टर्न इनटू अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट एंड देयर इज नो अपोजिशन टू दैट आल्सो बिकॉज देयर इज अ हिस्ट्री प्रोवाइड द इनफ एविडेंस टू दैट. ठीक है. गेटिंग इट? ओके. So don't get over confused, please. यूपीएससी वैसे ही बहुत ज़्यादा वो है. ठीक है. ओके. सो फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म समझ में आ गया. तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बेसिकली नियो लिबरल कॉन्सेप्ट है. ओके. इट इज अ नियो लिबरल काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट. एंड व्हाट हैपेंड इन दिस कॉन्सेप्ट? बेसिकली स्टेट का पावर आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, द पावर ऑफ द स्टेट, द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्टेट इंक्रीज्ड. नाउ दिस इज नॉट हैपन इन वेयर? इन अमेरिका. अमेरिका में एक्चुअली में रिवर्स हो गया. बिकॉज ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड द सिक्योरिटी रीजन, द पावर ऑफ यूनियन हैज इंक्रीज्ड. द बार्गेनिंग पावर तो है भी नहीं वहां पे. The power of union has been increased over a time. ठीक है. But this not happen in the case of India. India में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से
और कोएलिशन गवर्नमेंट की वजह से बार्गेनिंग पावर ऑफ स्टेट का बढ़ गया, ठीक है, पहला। और जब when I talk about coalition politics, what does it implies? It implies regionalism, increasing regionalism in the country, ठीक है। When we talk about coalition, we impliedly talk about there is an increase of regionalism in the country. Regionalism समझते हो? Local politics. Politics based on certain specific region, religion, ethnicity, बहुत सारी चीजों पे, ठीक है। आमी बांग्ला है तो वो एक अलग रीजनलिज्म ही है, ठीक है। तो ऐसे रीजनलिज्म बढ़ गया, ठीक है। महाराष्ट्र का, तमिल, लॉट ऑफ मैनी थिंग, ओके फाइन। So these are the two major reasons which leads to the increase in the coalition politics or increase the bargaining power of the state, ठीक है, fine. But security, internal and external both, it will time and again will be exploited by the center to regain its position what he has lost, what they have lost, ठीक है। It will regain its position. Competitive federalism समझ में आ गया? कोई confusion इसमें? Any confusion on this? किसी को नहीं? Very good. This is what we have for the competitive federalism and cooperative federalism. ठीक है? Neoliberal philosophy. Liberal philosophy मैंने बताया नहीं अभी तक के, बताते हैं liberal philosophy, ठीक है। और कुछ एनी क्वेश्चन? कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछो। दिस कंसेप्ट, क्लियरिंग दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन? ऑल क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया, सर ने कंफ्यूज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ? एक बार ये प्रोलिफरेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप एक इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ठीक है, कहीं पर। मैं एक क्या हूँ, वो है, आई एम अ बिजनेसमैन, आई वांट टू सेट अप एन इंडस्ट्री समवेयर। तो आई विल कंसीडर व्हाट? आई विल कंसीडर मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है, टू कंसीडर टू सेट अप माय इंडस्ट्री। कंसीडरिंग दैट मल्टीपल फैक्टर विच गोस इन माय फेवर, ठीक है, जो मल्टीपल फैक्टर है जो मेरे फेवर में जाएंगे उसे प्रोलिफरेटिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स? 368 is an amending procedure. Article 368. प्रोसीजर है तो अमेंडमेंट का। अमेंडमेंट का दो प्रोसीजर, आई कम टू दैट अमेंडमेंट वाले पार्ट में। जब अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो बताएंगे कितने टाइप ऑफ मेजॉरिटी होती है, ठीक है। अभी तो बताया भी नहीं है तुम्हें मेजॉरिटी के बारे में, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पहुंचे हम लोग, इसके बाद ही पहुंचना है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है। एनीबडी, एनी हैव एनी आइडिया, एनी डाउट? सॉरी, एनी डाउट ऑन दिस टॉपिक? नो सर, कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। न्यू लिबरल फिलोसफी इज बेसिक अ काइंड ऑफ व्हाट इज, पहले तो इसको ब्रेक कर लो, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट वर्ड एंड दिस इज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है। न्यू का मतलब होता है न्यू, ठीक है। तो न्यू liberalism. So basically what does it mean, neoliberal philosophy? It simply means, what is a liberal philosophy? Liberal philosophy किस पे बिलीव करता है? लिमिटेड स्टेट, ठीक है। लिबरलिज्म किसकी बात करता है? लिमिटेड स्टेट की। व्हाट इज लिमिटेड स्टेट? दैट इज रोल ऑफ स्टेट स्पेशली इन द इकोनॉमी इज मिनिमम, ठीक है, मतलब एक्चुअली नो, ठीक है। कोई काम नहीं है उसका इकोनॉमी में। उसका काम कहाँ है? खाली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, फॉरेन रिलेशन मेंटेन करने में, या वॉर करने में, या पीस की ट्रीटी साइन करने में, उतना ही काम है उसका, उससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं है। इसी के लिए उसे नाइट्स वॉचमैन भी कहा जाता है स्टेट को, उस टाइम के स्टेट को ना। दिस फिलोसफी हैज एमर्ज, लिबरलिज्म की फिलोसफी जो है ये बेसिकली एमर्ज कब हुई थी? इट एमर्ज इन द 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, ठीक है। ये तब की फिलोसफी है, ओके। बट उसके बाद में
देयर अनदर रेवोल्यूशन केम, दैट इज अ मार्क्सिस्ट फिलोसफी। तो मार्क्स ने क्या किया, मार्क्स ने सब कुछ स्टेट के पास दे दिया, स्टेट ड्रिवन इकोनॉमी बना दिया, ठीक है। एडम स्मिथ की फिलोसफी है लिबरल फिलोसफी, ठीक है, जो इकोनॉमी पे है फ्री मार्केट की, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई विल वर्क अकॉर्डिंगली। मार्क्सिस्ट आया, मार्क्सिस्ट ने दूसरा एक आने दिया। अब इसके बाद में नियो लिबरल आते हैं। कैसे? व्हाट दे डू, दे कंसीडर सम रोल टू द स्टेट, कुछ रोल है स्टेट का, ठीक है, जैसे कि पुअर्स वगैरह के लिए, ठीक है, जैसे कि पुअर को ध्यान रखना या एल्डरली सिटीजन का ध्यान रखना, ठीक है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, तो उसका कुछ काम तो है स्टेट का। पर इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट द मार्केट नीड्स टू बी फ्री अगेन। पहले कैसा होता था कम्युनिस्ट में, मार्केट का प्राइस कौन डिसाइड करता था? मार्केट का प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस कौन डिसाइड करता था? गवर्नमेंट। मिनिमम डिसाइड ही कर देती थी कि भाई इतना ही लेना है तुम्हें, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है, ओके। व्हाई फ्यूल प्राइस इज हाई, व्हाई द प्राइस ऑफ ऑनियन, पोटैटो, टमाटो is high and low, why this is happening in the country? अब क्या करना हो लग गया, अब मार्केट के हिसाब से चलने लग गया, डीरेगुलाइज कर दिया हमने उसे, ठीक है। हमने पहले पेट्रोल को किया, फिर डीजल को किया, अभी हमने ये सब्जियां नहीं इंपॉर्टेंट है, इसे सरकारें गिरी जाती हैं, आलू प्याज से हमने उसकी प्राइस हमने क्या किया, डीरेगुलेट ही कर दिया कम्प्लीटली। अब प्राइस क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट नेवर इंटरवीन इनटू curtailing the price, रेगुलेट नहीं करता है गवर्नमेंट। व्हेन यू डोंट रेगुलेट द मार्केट, दैट इज नोन एज, ठीक है, लीज इंटरफेरेंस जो आप करते हैं। जब सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम जाती है ना, तब आप इंटरफेयर करते हैं। लिबरल में तो आप सिचुएशन कितनी भी एक्सट्रीम चले जाए, आप उधर भी इंटरफेयर नहीं करते, unless and until it does not lead to the law and order problem or it does not lead to the war, ठीक है। लिबरल जो फिलॉसफी पहले 17-18 सेंचुरी में थी, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम राइट्स थी, मतलब राइट का मतलब बहुत ज्यादा फ्रीडम था आपको उस टाइम पे, फ्रीडम तो बल्कि आपका कम हुआ है, ठीक है, आपको बड़ा नहीं है फ्रीडम, आपका उस टाइम कम हुआ है फ्रीडम, देखा जाए, ठीक है। यू गॉट द पॉइंट, न्यू लिबरल फिलॉसफी, ओके। देयर इज अनदर वन इज सेमी प्रेसिडेंशियल, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सेमी प्रेसिडेंशियल में टशल ही होता है खाली, ठीक है। एक है सेमी प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल, सेमी है ना, क्या था बाकी उसके बाद में, सेमी प्रेसिडेंशियल, और अपार्ट फ्रॉम हमने 6 लिखा था ना, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, अच्छा कॉजी तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। एक है तो पहले प्रेसिडेंशियल पढ़ लो, ये मत पढ़ो, पहले प्रेसिडेंशियल पढ़ लो, ठीक है। व्हाट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ वन इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज इन एनी कंट्री यू हैव अ टू हेड, ठीक है, आपके हर कंट्री में 2 हेड होते हैं, ठीक है। एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है इन द इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि इलेक्टेड होता है, ये इलेक्टेड होता है। नाउ दिस कैन बी एनीथिंग, द हेड ऑफ द स्टेट कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी एनीथिंग, हेड ऑफ द स्टेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। So this can be a monarch, इलेक्टेड भी हो सकता है। अब ये इलेक्शन कैसे भी हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। इंडिया का कैसा है, इंडिया इनडायरेक्ट है। अमेरिका का नो, इनडायरेक्ट है, ठीक है।
दैट इज अ कॉमन मिस्टेक, ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है। बताते हैं, जैसे तुम किसे चुनते हो, जैसे कि डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन का सिंपल मीनिंग होता है व्हेन यू एज अ पीपल, व्हेन वी चूज समबडी आवर रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज नोन एज डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। जब हम चुनते हैं, वी एज अ पीपल इन द डेमोक्रेसी चूज, तो वी चूज whom, we choose MLA, we choose MPs, we choose corporates, ठीक है, and we choose prime minister and we choose CM, ठीक है, ओके। क्या क्या चूज कर रहे हैं हम लोग, वेरी गुड, we never choose prime minister and we never choose CM, that is not our job, वो लोग खुद ही करते हैं, वो उनका सर दर्द है, either they are chosen or they are elected, we never choose PM, we never choose CM, we never vote for PM, we vote for our representative, ठीक है, that particular the collection of the representative choose their leader, that can be considered in the state as a CM and that can be considered in the state as a PM, ठीक है। when we choose such people, that is known as indirect, direct, अच्छा, when CM is chosen or PM is chosen, that is an indirect election, डायरेक्ट इलेक्शन है PM के लिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कहाँ सुना है तुमने कि PM को सिलेक्ट करने के लिए इलेक्शन हो रहा है, ऐसा सुना है कभी इंडिया में? कौन करता है? PM और CM के लिए इलेक्शन होता है। अभी उत्तराखंड में जो नया CM बना इलेक्शन से बना है, तीरथ सिंह रावत। सपोर्ट नहीं होना, पैसा और करिश्मा होना चाहिए, सपोर्ट वपोर्ट छोड़ो। या कंफ्यूज्ड, हाँ पूछो। You never vote for prime minister or CM, you vote for your representative. This is the technicality that you need to understand. This understanding differentiate you from the common people. ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें डिफरेंशिएट करेगा कॉमन पीपल से। कॉमन पीपल से पूछोगे तो बोले CM ही इलेक्ट कर रहा हूं मैं या PM इलेक्ट कर रहा हूं, पर इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग, यू नेवर चूज CM, you never choose PM. That is the face of the party and it is guaranteed कि वही बनेगा। नो, डिपेंड, अगर जीत भी गया तब भी जरूरी नहीं है कि वही बने, वो तो पार्टी चेंज कर सकती है ओवरनाइट, ठीक है। तो पार्टी अगर ओवरनाइट चेंज कर दे तो व्हाट इज दिस, व्हेन पार्टी हैज शोन यू सम फेस and you have chosen him as a CM and PM, the party has changed that particular CM and PM overnight after winning the election. What will happen in that case? There is a trust deficit. There is a breach of trust by the elected representative and that is not accepted in the democracy. ठीक है, ऐसे समझो। So we never choose PM, we never choose CM. Okay, we choose just our representative. Our representative, either election or by any means, they choose their leader. Their leader is prime minister in the country, CM in the state. Okay, then the prime minister or CM, they choose his or her council of minister. ठीक है, वो उसके बाद में चूज करते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ऑलरेडी सारी पहली चीजें बातें हो रखी है कि कौन बनेगा। ओके, सो व्हेन वी चूज डायरेक्टली द रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज द डायरेक्ट इलेक्शन। And when our representatives, they participate in some election and choose somebody for some office, that is known as indirect election. जब हमारे people's representatives choose somebody, जैसे कि president, example case in India, president, case in the India vice president, is this elected by indirect election from the representatives. अब इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है,
तो उसमें स्टेट भी पार्टिसिपेट करती है। वाइस प्रेसिडेंट के केस में नहीं है ऐसा, सिर्फ पार्लियामेंट। आई कम टू दैट, टेक्निकलिटी है वो हम पढ़ेंगे इलेक्शन के टाइम। पर अभी इतना तुम समझो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे होता है, इनडायरेक्ट होता है इंडिया में। प्रेसिडेंट in any country, the president is the head of the state. Head of state. Why head of state? He is the first citizen of India. ठीक है? He represent India in the international forum like UN. ठीक है? सारी चीजें. Now, president is also, now we have understood that the government is actually divided into three. गवर्नमेंट कितने में डिवाइडेड है? तीन पे। सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, बाय द थियरी और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी का तो हेड हमको मालूम है, किसी भी कंट्री का अलग अलग, हमारी कंट्री में CGI है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का कौन है हेड? लेजिस्लेचर का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। वेरी गुड, नोबडी। और यस और नो? नोबडी। यस और नो? यस और नो? हाँ, नो, यस। Who ascend the bill? तो कौन होगा हेड लेजिस्लेचर का भी? इतना कंफ्यूजन के बाद में कमाल है। तो एक्चुअली में वो हेड भी लेजिस्लेचर का भी वही होता है, एग्जीक्यूटिव का, लेकिन एक्सप्लिसिटली एग्जीक्यूटिव का हेड होता है वो। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एनी वर्क you will be appointed as an IAS officer, IPS officer, you will be appointed in the name of the president, ठीक है, in the name of the president you will be appointed, so is the head of the executive also, पूरा executive organ का head भी वही है। indirectly you can say that it is heading the legislature also, it is heading actually legislature also, so president has in both। तो सिर्फ सेरेमोनियल नहीं है, उसके कुछ वो भी हैं, फंक्शंस भी है, ठीक है, पर वो गलत है, नहीं होना चाहिए। Anyways, so this is the presidential system. So this is what we have in the head of the state. Now head of the government, दो हेड होते हैं, एक होता है head of the state, head of the government होता है। And don't get confused in the de jure and ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत की गलती है, उसने ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों ही de jure है, दोनों ही de jure है, दोनों ही de facto होंगे। कोई एक डिजूरी और डिफैक्टो नहीं होता है, नॉमिनल और रियल कुछ नहीं होता है, ठीक है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, नहीं आएगा ही नहीं, पहले तो नहीं आएगा। अगर आ गया दो द रियल पावर, डिजूरी जैसा कुछ भी नहीं होता है वैसे, नॉमिनल जैसा कोई पावर नहीं। व्हाट इज नॉमिनल पावर? बाय लॉ पावर है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? कैन अ लॉ बिकम, can any law in India be effective without the assent of the president? तो नॉमिनल कैसे हो गया? पावर तो है ना उसके पास में, ठीक है। पावर है अलग बात है, वो इम्प्लाइड है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे है, ठीक है, पर पावर है उसके पास में, ठीक है। इट इज बोथ, वो दोनों ही डिफेक्टो ही है उसका, डिजूरी उजूरी कुछ नहीं है भाई। So don't get confused in that. It is created by Lakshminarayan. Don't do that. Okay? It has its own power, its own arena. ठीक है? उसके अपने अरीना में उसका पावर है, and that is explicitly mentioned, explicitly shown. ठीक है? क्योंकि वो क्या है? He is exercising that power in the pretext of what? In the pretext of being a head of the state. Head of the executive, head of the legislature, he is exercising that power, and government is exercising all the power. The prime minister is exercising all the parliamentary system,
in the prime minister exercising all the power. Because of what? Because of having a democracy in the state. Because of representing the will of the people to the president. You please act on this, on our advice, because it is not my advice. It is advised by the people. And you kindly act on this. ठीक है, तो दोनों ही डिफेक्टो है, डी जुरी युजरी कुछ भी नहीं है. ठीक है, लक्ष्मीकांत हैज फूल्ड यू पीपल. वही कह रहा, कुछ चीजें है गलत, ओवर सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में गलत हो गई. नाउ गवर्नमेंट इलेक्टेड होगा, तो यू विल हैव व्हाट, यू विल हैव अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यू माइट हैव अ पीएम. ठीक है, ओके. नाउ अब ऐसे समझ लो इसको, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. जब पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा तो देयर विल बी हेड ऑफ द स्टेट ऑल्सो और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों होंगे. अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम हुआ तो दोनों होंगे, और दो अलग अलग लोग होंगे, नॉट द सेम पर्सन. सेम पर्सन विल नॉट बी होल्डिंग बोथ द पोजीशन. ठीक है, दोनों अलग अलग पोजीशन, टू डिफरेंट पीपल विल होल्ड. द पीएम विल बी अलग, different people, hand of the state, either a president or ceremonial head or any head, monarchy. ठीक है, in the case of England queen. ठीक है, तो वो head of the state है, तो दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, but in the case of parliament presidential system क्या होगा, the same person will having the both the position. He will be the head of the government also and he will be head of the state also. Both position will be held by one. ठीक है, okay.